Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. If you are new to my channel, hi, my name is Monty. I make videos on fashion, lifestyle and beauty. I know I haven't posted since long and I really miss this. But honestly, this video is worth the comeback. So आज मैं करने वाली हूँ एक affordable budget glow up. Yes, स्किन केयर प्लस मिनिमल मेकअप अंडर ₹1000 सारे प्रोडक्ट्स के कॉस्ट मिला के है 1000 स्किन केयर प्लस मिनिमल मेकअप जो मैंने मेकअप करके रखा है. दिस इज अ मिनिमल मेकअप दैट आई डिड. दिस प्रोडक्ट्स आर रियली अफोर्डेबल बट द क्वालिटी इज सो अमेजिंग. कुछ तो मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड कुछ मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है एंड आई एब्सोल्युटली फेल इन लव विद देम. सो अगर आप स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स है या फिर बजट में अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू. सो या इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. तो सबसे पहले हम करेंगे अपने फेस को क्लीन. इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डॉट इन की का बैरियर रिपेयर फेस वॉश. दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फेस वॉशेस. काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. इट हैज़ जेल लाइक कंसिस्टेंसी. दिस वन एंड द सिंपल फेस वॉश आई लव देम. This one cost around 200 something for 100 ml, which is so affordable, but it works amazingly to remove dirt, impurities and cleanse your face thoroughly without stripping the skin's natural oil. फेस वॉश ऐसा ही होना चाहिए जो आपके स्किन को क्लीन तो करे अच्छे से बट डजंट ड्राई आउट योर स्किन. सो वेदर यू हैव एनी स्किन टाइप यू आर गोइंग टू लव इट. And here is a bonus tip, DIY face brightening scrub and mask. You don't need to spend extra जब आपके किचन में ही ये सारी इफेक्टिव चीज़ें मिल जाएगी. सो इस DIY के लिए मैंने यूज़ किया है कर्ड, बेसन, राइस फ्लोर एंड हनी. इन सबको अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है एंड 2 to 3 मिनट्स के लिए जेंटली स्क्रब करना है. इसमें राइस फ्लोर है जो वर्क करेगा एज ए स्क्रब पार्टिकल, जिससे आपके स्किन का एक अच्छा सा एक्सफोलिएशन हो जाएगा, जिससे सारे डर्ट, इम्प्योरिटीज एंड डेड स्किन सेल्स है वो सारे रिमूव हो जाएंगे एंड योर स्किन विल फील सुपर सॉफ्ट एंड स्मूथ. I personally love DIY home remedies and it works really well for my skin. फेस स्क्रब के तुरंत बाद आपको फेस वॉश नहीं करना है. लेट इट सिट फॉर 10 मिनट्स सो दैट इट वर्क्स मोर इफेक्टिवली एंड गिव्स यू दैट ग्लो, हाइड्रेशन एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट. माई स्किन वॉज फीलिंग सुपर सॉफ्ट, ब्राइट. इट एड्स दैट नेचुरल ग्लो टू माई स्किन. लव इट. एंड नेक्स्ट है टोनर. येस, मैंने 1000 रुपीज़ के बजट में टोनर भी इंक्लूड कर लिया. कैन यू बिलीव? मीन वाई टू स्किप टोनर? आई लव अप्लाइंग टोनर एंड ये मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है मूडी का कोकोनट वाटर एंड हाइलोरॉनिक एसिड टोनर. दिस इज एक्चुअली माई फर्स्ट मूडी प्रोडक्ट. इससे पहले मैंने मूडी का कोई भी प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया था बट आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड. इट हैज़ अ वेरी सटल रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस विच आई लव. इट फील्स calming and soothing on the skin. It also hydrates the skin. I also use it as a midday face mist. I wasn't expecting much, but I am genuinely surprised. Now let's move on to moisturizer. For that I have the OG Pond's moisturizer. This is the Pond's Light Moisturizer and this retails for only ₹55, this small tub, and this one is Pond's Super Light Gel Moisturizer and this one has a gel consistency and it retails for only ₹64. So today I'll be using the Pond's Light Moisturizer and let me tell you, this moisturizer is really good if you have dry, very dry, normal skin or even combination skin type, because this is very lightweight. It absorbs quickly into the skin, no greasiness or oiliness. कोई भी हैवी फील नहीं है बट माई स्किन फील्स वेल मॉइस्चराइज्ड एंड इट इज़ सो अफोर्डेबल. मतलब इतने कम प्राइस में इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र. If you want gel moisturizer or have oily skin type, then you can go for this Pond's Super Light Gel Moisturizer. Moving on to sunscreen, I'm using the Conscious Chemist Berry Bright sunscreen and this should be viral, you know. It's so good. I don't see many people talking about this. And why I'm telling this, let me show you. It blends into the skin super quickly. It's like moisturizer. It's actually moisturizer plus sunscreen. They have written on the pack. So if any day you don't feel like applying moisturizer and layer it with sunscreen, you can just skip moisturizer and apply this sunscreen and you are good to go. Do you see how quickly it blends into the skin? No white cast at all. It gives you that dewy, bright, even tone look without any oily or greasiness. And इसका छोटा बॉटल आपको 162 में मिल जाएगा. I mean, it's just too good.
मूविंग ऑन टू मेकअप, आई बी यूजिंग द OG पॉन्स BB क्रीम जो मैं अपने कॉलेज टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ एंड आई एम इन द शेड आइवरी। सो मैं इसे डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ एंड अपने फिंगर से ही इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है। इट गिव्स यू मीडियम कवरेज बट यू कैन बिल्ड इट अप एज वेल। ये स्किन को एकदम इवन टोन कर देता है विथ अ सटल ग्लोइनेस। It's perfect for a no makeup look when you want to wear something light on a daily basis yet gives you a good coverage, then this kind of product is totally a must have. इसके बाद मैं यूज़ करूँगी एक आईब्राउ पेंसिल। दिस इज़ द मार्स ब्राउ बेटर आईब्रो पेंसिल इन द शेड डार्क ब्राउन। ये बहुत ही नेचुरल लगता है एंड आई नेवर स्किप माई ब्राउज। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। इट लिटरली फ्रेम्स माई फेस। बहुत ही हल्के हाथों से मैं अपने ब्राउज को फिल कर लेती हूँ। यू कैन सी द डिफरेंस एंड इट ऑल्सो हैज़ अ स्पूली जिससे मैं ब्रश आउट कर लेती हूँ, सो इट लुक्स रियली नेचुरल। Okay, so this is an optional step, so I don't always use a mascara, but on some days I really want my lashes to look pretty, so it's not coming under 1000 budget, but it is so affordable. I had to share with you guys. This is the Hilary Rhoda's mascara. It instantly lifts my lashes and gives me that soft fluttery look which looks so natural. Absolutely love it. I didn't even curl my lashes, but it gives you that curling effect. ऐसा लगता है कि yes, I have lashes. And last but not the least, I have something new in town. It's Nivea's lip and cheek tint, yes. And this is the second time I'll be using it, and just look at the color. It's in the shade red. It's quite pigmented as you can see. And this particular shade will suit all Indian skin tone. If you have fair, medium, duskier skin tone, this will going to look so pretty. And if you have pigmented lips as well, this color will going to show up beautifully. And good thing it also comes with SPF, so it protects your lips as well. And now I'm applying it on my cheeks and just see how beautifully it blends. It gives you that natural flush of color that you need on an everyday basis. You can apply it on your nose, chin, eyelid, and it just makes you look so put together. This kind of multi-purpose product is super quick and easy to use and travel friendly as well. You can just keep it in your bag and use it when you need a quick touch up. So yeah, that was my budget glow up challenge, skincare plus makeup under ₹1000. I hope this video was helpful for you all. Let me know in the comment section if you want me to do more such budget friendly videos. I'll see you guys in my next video. Bye.